Hello, everyone, and welcome to this live session with Ask PB, our newest series to decode all things about insurance. Ask PB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं एंड आर डोमेन एक्सपर्ट्स विल आंसर योर क्वेश्चंस. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया हुआ है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड शूट ऑल योर इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज देयर. Now, today we have Rhishabh Garg with us. He is the business head of term insurance at Policybazaar, and he will be answering all of your queries about term life plans. Welcome to the show, Rhishabh. Thanks, Simran. Now, let's get started. For starters, can you help our viewers understand what term insurance is and why is it so important? Sure, Simran. So, term insurance is the most basic form of life insurance. It basically is a replacement to your income in case something happens, something terminal happens to you. So, for example, let's say you buy a term insurance policy uh, and you buy it for 40 years, 30 years of your term, you continue to pay a premium. And if something happens to you, you get a fixed sum assured as a death benefit. So your family gets fixed sum assured as a death benefit. All right. Now, how much coverage does an individual really need? Can you guide us through the tenure as well? On the tenure, I would say that generally किसी को भी अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो उसको अपने एक रिटायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए. The age till when they have any kind of financial liabilities is when they should buy a term insurance for. For example, let's assume that an individual is 30-year-old. He has kids who are around 5 years old. Practically speaking, by the age of 30 of their kids, they would be well settled, all education completed, masters completed. So that practically means this particular individual needs a cover of around 25 years, right? So he should be buying a cover up to, since he's 30 years old, he should be buying a cover up to 65. थोड़ा buffer लेना है तो up to 70 कर सकते हो. And that's practically what he should be buying from a 10-year perspective. अगर हम इनकम की बात करें, अगर हम समय शॉर्ट की बात करें एक्चुअली, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं क्योंकि इट इज सपोज टू बी अ रिप्लेसमेंट टू योर इनकम. तो गाइडलाइंस होती हैं कि आप एज एंड इनकम के बेसिस पे अप्रॉक्स 20 to 25 टाइम्स ले सकते हो. डिफरेंट इंश्योरर्स हैव डिफरेंट गाइडलाइंस, बट आप 20 से 25 गुना तक का टर्म इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं. बट दैट इज द गाइडलाइन. नाउ कमिंग टू व्हाट इज द आइडियल अमाउंट, आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट कि आप किस इनकम स्ट्राटा में फॉल करते हैं. तो इफ यू आर एबल टू सेव significant amount of money and you are parallelly creating assets for your family, तो आपको सिर्फ asset protection करना है. आपको बहुत ज़्यादा sum assured की जरूरत नहीं है. In that case, kind of a scenario, I would advise a 10 times multiple. But if you fall in a lower income segment, then you should go for a 20 times sum assured, because the chances of you being able to build a significant corpus, आप अच्छा खासा एक सेविंग करके एक कॉर्पस बिल्ड कर सकें, एक एसेट बिल्ड कर सकें अपनी फैमिली के लिए, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, उसमें रिस्क बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा ज़्यादा समझो. ओके. और ऋषभ, टर्म इंश्योरेंस में एड ऑन या राइडर लेने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? टर्म इंश्योरेंस में एड ऑन्स एंड राइडर्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज of two reasons. ये add-on riders के कुछ benefits होते हैं. There are add-ons like waiver of premium, which basically says that in case something happens to you because of any kind of accident or disability, आपको किसी तरह की disability हो जाती है अगर because of any accident or any reason, तो आप earn नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप premium नहीं pay कर पाएंगे. तो waiver of premium which comes at a very minimal cost, like very minimal cost. उसमें आपको ऑटोमेटिकली वो प्रीमियम्स पे नहीं करने पड़ते हैं, बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट अर्निंग, यू हैव बीन डिसेबल्ड, यू हैव टू जस्ट सबमिट दोस डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन इनेबल द राइड. तो आपके बाकी सारे फ्यूचर प्रीमियम्स माफ हो जाते हैं. द पॉलिसी चलती रहती है, उतना ही समय शॉर्ट चलता है. तो दीज आर द काइंड ऑफ riders which really help. Other riders which are pretty helpful is accidental death and disability rider. So in case you have
any kind of accidental death or disability, you get a higher sum assured. तो अगर आपने 1 करोड़ का sum assured लिया और आपकी accident की वजह से अगर death हो, then you get 50 lakhs more. Let's say if you've taken a rider of 50 lakhs accidental death. People जिनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है वो होते हैं जो कि टू व्हीलर्स पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं, जिनका एक्सपोजर टू व्हीलर्स पे ज़्यादा है या ऑटोज में ज़्यादा है. दोज काइंड ऑफ पीपल should prefer a accidental death and disability rider. And the most important rider is the critical illness rider. We all know अगर आपको कोई critical illness हो जाती है, and critical illness can be different forms of cancer, multiple critical illnesses are there. In fact, there are riders जो कि 64 illnesses का cover करते हैं. अगर आपको illnesses हो जाती हैं तो एक आपका आता है immediate health expense. And अगर आपने health insurance ले रखा है तो उससे आपको advantage होती है कि आप वो एक health expense cover कर सकते हैं. Plus also उस ड्यूरेशन के बाद क्योंकि आपको एक क्रिटिकल इलनेस हो गई है, आपकी इनकम बंद हो जाती है. यू आर स्पेंडिंग कंटिन्यूसली ऑन योर एक्सपेंसेस फ्रॉम अ हेल्थ रिकवरी पर्सपेक्टिव, और आपकी इनकमिंग इनकम भी बंद हो जाती है. दैट्स व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट यू नीड अ हायर सम एश्योर्ड, बिकॉज आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, जो आपके करंट खर्चे हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन दैट सिनेरियो. एंड दैट्स वेयर द क्रिटिकल इलनेस राइडर प्लेज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. So I think these three are very important riders in my mind, and I think basis the lifestyle, basis the stage of life you are in, it is important that you choose the right rider. All riders come at a very minimal cost. तो आपका जो बेस टर्म होता है उसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में ये उससे भी कम होते हैं. वैसे तो अगर मैं बेस टर्म की भी बात करूँ उसकी भी कॉस्ट बहुत कम है. मतलब प्रैक्टिकली आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले सकते हैं इन 1000 रुपीज़ अ मंथ. अगर मैं उसको पर डे में कन्वर्ट करूँ, दैट्स प्रैक्टिकली एक चाय समोसा दिन का, एंड जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बर्गर दिन का. सो प्रैक्टिकली दैट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर टर्म इंश्योरेंस फॉर अ 1 CR काइंड ऑफ अ समोसा. तो अगर कोई रिटर्न कैलकुलेट करने लगेगा तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई भी चाहता नहीं है असली में कि वो रिटर्न्स का कुछ फ़ायदा हो. इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि उसका कभी यूज़ ना करना. Thank you for explaining that so well, Rishabh. Now, if we talk about NRIs, क्या ये लोग भी इंडिया से टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं? Absolutely, absolutely. In fact, पहले टर्म NRIs हमेशा से टर्म इंश्योरेंस ले सकते थे, चाहे वो NRI बाद में बने हो चाहे पहले से NRI हो. एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या अगर उनके पास ऑनगोइंग पॉलिसी है, इन दोनों केसेस में NRIs आर कवर्ड अंडर टर्म इंश्योरेंस. In fact, what has happened in the industry is that the industry has understood the importance of NRIs living outside India in much more developed countries and earning a higher income. Uski wajah se they have also relaxed a lot of underwriting guidelines so that the processing for an NRI customer becomes much more easier and the issuance chances increase. So now they are issuing policies up to 3 CR sum assured on a telemedical basis or a video medical basis, and that is really advantageous for a customer because then he does not have to bear the cost of getting medicals done, and medical costs can be really high outside. So that is one big advantage. The second big advantage for an NRI to buy a term insurance from India is that in a lot of scenarios, unke jo nominees honge, they might be based out of the claim process has to happen in India, right? तो उनके लिए इंडियन इंश्योरेंस से बात करके वो क्लेम प्रोसेस कराना माइट बी मच इजियर वर्सेस अ इंटरनेशनल इंश्योरेंस. दैट इज अनदर फैक्टर. एंड द थर्ड फैक्टर इज द कॉस्ट. The premium for a term insurance if bought from India versus if bought from let's say in UAE or in Singapore would be almost 50% of the premium. तो 50% cheaper पड़ता है एक NRI को term insurance इंडिया से. That's overall it's a win-win situation. Okay. And is there a maturity benefit in term insurance? So term insurance has a variant which has a maturity benefit. Pure term insurance does not have any kind of maturity benefit because, and that's उसी वजह से वो एक चाय के प्राइस में आ पाता है. अगर आप चाहें तो आप एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट ले सकते हैं. उस केस में ये होता है कि अगर आपकी मेच्योरिटी हो जाती है एंड लेट्स से आपने अगर 30 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया था
एंड आपको कुछ नहीं होता है, ऑल थिंग्स आर वेल फाइन, देन यू गेट द प्रीमियम बैक, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो सारा अमाउंट वापस आ जाता है. दैट इज द रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट. Having said that, I think there are much better products now which also offer a special exit feature. Special exit feature is basically a very strong advantageous point for any customer because उसके लिए the way these special exit features work is, अगर आपने let's say 35 years का term insurance लिया है, तो आप 30th year में बोल सकते हैं कि you know what, मेरी financial liabilities are over. I don't think I want to continue this term insurance and I can exit this term insurance. और जो बाकी 5 साल का term premium मुझे नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है श्योर ग्रेट, इनफैक्ट आप ऐसा कीजिए, आप जो पुराने आपने 25 साल का प्रीमियम दिया है वो भी आप वापस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेशल एग्जिट बेनिफिट. पहले अगर किसी को ऐसा कुछ करना होता था तो उनको पॉलिसी लैप्स करनी पड़ती है, जस्ट स्टॉप पेइंग द प्रीमियम, दे डिड नॉट गेट एनीथिंग इन दैट. दिस इज अ मच बेटर फीचर and they can get all their premiums back. In fact, it is practically a return of premium. पर इसका कोई additional charge नहीं है, इसका कोई additional charge नहीं है, and that's why it is practically coming at zero cost, right? Because if nothing happens to you, and that is what everybody hopes to live longer, if nothing happens to you, there is no cost associated with it. या ऋषभ, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो क्या कभी प्रीमियम में भी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं? नहीं, टर्म इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट जिसमें प्रीमियम्स आपके कांस्टेंट रहते हैं फॉर द लाइफ टाइम. If you buy a term insurance today, whatever premium you are being charged today, you will continue to pay that premium only for that policy. There is no change in the premium. It is not like a health insurance product, जहाँ पे premiums rise होते हैं basis per age. It is a long-term product. During the tenure, it remains the same. All right, thank you for explaining that. Guys, we are open to taking questions. तो अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है टर्म लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ दीजिए एंड वी विल बी टेकिंग अप योर क्वेश्चंस. Now Raj is asking, can term insurance be purchased for a group of individuals such as employees in a company? Absolutely, Raj. There is a concept of group term insurance where you can buy the term insurance for a group of employees in your company. Comes at a much cheaper cost because obviously the risk is kind of hedged across multiple customers, and that's why उसकी cost और कम हो जाती है. But yeah, that is a different insurance product, and individual retail term is a different insurance product. Group term में आपको generally उतने multiplier of कवर नहीं मिलते, तो जैसे मैंने बोला था 15 से 20 गुना तक आपको टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, वो आपको ग्रुप टर्म में मिलने मुश्किल है. All right. Navya is asking, term insurance में क्या कवर नहीं होता है? टर्म इंश्योरेंस में फ्रॉम अ डेथ पर्सपेक्टिव only first year suicide is not covered. In case you end up doing a suicide in the first year, that is not covered. All other kind of deaths are covered. All right. दीक्षा इज आस्किंग, मैं 30 साल की हूँ, क्या मैं इस एज में टर्म इंश्योरेंस ले सकती हूँ? इसका मैच्योरिटी पीरियड कैसे वर्क करता है? Absolutely, Diksha. So I'll answer the first question. आप 30 साल की हैं, इनफैक्ट ये बहुत ही बढ़िया एज है क्योंकि आपका प्रीमियम काफ़ी चीप आएगा. अगर आप 35 के होते हैं 40 के होते हैं तो आपका प्रीमियम सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है. And that's why you should definitely buy a term insurance. If you have an income, then great, because that is what you want to protect. टेन्योर पर्सपेक्टिव से ये बहुत पर्सनल सवाल है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था शुरू में, आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट कि आप अपनी लाइफ स्टेज के किस बेनिफिट, किस स्टेज पे हैं और आपके क्या लायबिलिटीज हैं. अगर मेरे मान लीजिए अगर एक होम लोन चल रहा है और उसकी पीरियड ही 30 ईयर्स है एंड आई हैव अ किड जिनकी 15 साल में मेरी लायबिलिटीज उनकी खत्म हो जाएंगी, तो मैं तब भी 30 साल का लेता क्योंकि मेरा होम लोन है जो 30 साल तक चल रहा है, तो मेरी लायबिलिटीज चल रही है. तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन आप किस लाइफ स्टेज पे हैं और आपकी लायबिलिटीज क्या चल रही है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कितना टेन्योर लेना है. All right. Rahul is asking, why claim settlement ratio is not 100%? Why do some claims get rejected? I want to avoid for future, so just asking for precaution. Absolutely, Rahul. First of all, let me answer कि 100% कभी नहीं हो सकता.
एंड क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इन एनी प्रोडक्ट जो इस तरह से आपको एक बेनिफिट दे रहा है, उसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, राइट? तो अगर कोई बंदा फ्रॉड करेगा तो दैट विल ऑब्वियसली लीड टू प्रॉब्लम्स एंड रॉन्ग पे आउट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. दैट इज द रीजन दिस नेवर कैन बी 100%, क्योंकि जो भी फ्रॉड करते हैं उनको फिर ये लोग पिनलाइज करते हैं, दे डू नॉट पे द क्लेम्स. So that is the reason it can never be 100%. Having said that, from a good to know perspective और from a hygiene perspective कि आपको अपना claim process कराने के लिए या इंश्योर करने के लिए कि आपका claim में कोई प्रॉब्लम आए, आपको क्या क्या करना चाहिए. The most important thing is that you have to ensure that whatever details are being asked in the product, in the proposal form, are being filled by you in the correct fashion. आपकी income, आपका address, आपका medical history, all those details are of utmost importance, and that needs to be filled in the right fashion. All right. Kanika is asking, hi, I am a teacher. What is the best term plan for me? Kanika, आप teacher हैं, and since you are a salaried customer, there are a lot of plans which offer up to 5% discount for a salaried individual. You can go to our website, look at all the plans that we have. You can compare basis prices, basis the features they have. ऐसे कोई टीचर के लिए स्पेसिफिक फीचर्स नहीं होते हैं, बट द बेसिक फीचर दैट इज प्रोवाइडेड इज a 5% discount for a salary individual. You can definitely avail that and make a healthy decision. Yeah. Now, Chaturvedi Mahesh is asking, my question is on medical history of my parents. How will this affect the insurance and claim? So Mahesh, medical history of the parents इसलिए important होती है because there are some kind of diseases which are hereditary in nature, and it is important for the insurance company to know if you have those kind of diseases or not, so that they can accordingly evaluate your profile uh, before giving you a term plan. And आपने अगर मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करी है एंड आपकी इवैल्यूएशन हो गई, देन उससे क्लेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज देन द इंश्योरेंस कंपनी नोज all the facts and they've issued a policy basis knowing that those facts. Once issued, and since you've not done any facts, the claim will be all right. All right. Akshita Srivastava is asking, hi, I am a college student. Should I buy term insurance now or later? College students cannot buy term insurance practically because it is supposed to be a replacement for income, and क्योंकि आपकी अभी कोई income नहीं है, you are not eligible to buy a term insurance. Okay. Garud is asking, can term insurance be purchased for a group of individuals such as employees in a company? I think we've already answered this, Garud. After the live, maybe you can go back and just, look at the recap. Any more questions, guys? We are open to taking questions. Okay, Anuj is asking, how is the pricing for the regular customer different from that of a diabetic one? I think this is an interesting question. So historically, the pricing of a product did not change. Okay, so let me explain it in a different fashion. कि एक base price होता है जिसके basis पे आपको term insurance मिल सकता है. And since you are diabetic, there will be a counter offer or a medical loading that will be applied to your policy. That ranges between 50 to 75 or sometimes 100%, depending on the gravity of the matter. But that is a counter offer which is applied depending on your medical evaluation. Recently, there is a term insurance which has been launched, which is specific to diabetics, and offers a lot of benefits to diabetic customers. Obviously, that premium, uska premium is already loaded in the same fashion as a counter offer. But yes, since it is targeted towards diabetics, it has a lot of benefits being offered, which is an intangible value that is there for the customer. All right. Prashant is asking, what happens after term life insurance ends? Prashant, after term life insurance ends, it practically means that the person has outlived the tenure of the term insurance, and
congratulations, you should be celebrating with your family. Your liabilities are over, and whatever assets you have created, you should be enjoying with your family. If you talk from a benefit perspective, there is no benefit then, because uh, that's the objective of the insurance. या आप अगर कुछ हो जाता है तो then you are covered, but if nothing happens then everything is. Prashant, hope your query was solved. Sanket is asking, what are the documents required for buying a term plan? That's a very good question, Sanket. From a documents perspective, there are KYC documents which are required. तो आपको अपना आधार देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा in some cases. Then there are income documents which will be required. So that since this is a replacement for income, insurance companies need to ensure कि आपकी income जो आपने बोली है वो उतनी है. तो वो आपके salary slips या last 6 months के bank statements जिसमें salary आती है वो मांग सकते हैं. Let's say if you're a business owner and not a salaried guy, in that scenario you will have to submit your ITRs, your computation of income, जो एक CA provide करता है. Those documents kind of suffice. Nothing that is extraordinary and you might not have. All right. Akshay is asking, मेरा होम लोन एक्टिव है, टर्म इंश्योरेंस के स्पैन में अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या वो लोन भी कवर्ड होगा? तो अक्षय, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितना सम एश्योर्ड लिया और आपका लोन कितना चल रहा है. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आपका होम लोन चल रहा है लेट्स से 20 लाख का और आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है 1 करोड़ सम एश्योर्ड का, तो if something happens, then that 1 crore sum assured will be provided to your nominee. And क्योंकि उनके ऊपर एक liability होगी to pay off that home loan, so they can pay off that 20 lakhs from the 1 crore sum assured. All right. Rahul Mahajan is asking, what are the points I should consider while selecting an insurance company? I think there are multiple points that are important. The first and foremost is the features that particular term insurance offers and which are relevant to you. What are the kind of riders being offered? What is the claim settlement ratio? Uh, what is the brand value of that particular insurance company? And last but not the least, price. Okay. Dinesh is asking, is there any term plan where I can get my money in return? I think, Rhishabh, you've already answered this question, but it would be really useful for our viewers if you can, reiterate the point. Absolutely. I think there are two kinds of plans which exist which allow you to get a return of your premium. First is the term return of premium plans. They basically come at an additional cost, so your premium is almost twice. And what happens is that if nothing happens during the tenure of the product, then you get all your premiums back. The only disadvantage is that twice the premium is what you have to pay. There is another set of plans which are called special exit term plans with a special exit benefit. They basically allow you to exit 5 years or 10 years before the policy expires. So the way you can kind of optimize is, अगर आपको लगता है कि आपकी liability 65 तक चलने वाली है, तो आप 70 या 75 तक का term insurance ले सकते हो. And you can, once your liabilities are over, you can choose to exit and get all your premiums back. The advantage in this is that इसमें 2x the premium नहीं देना पड़ता, 1x the premium भी देना पड़ता है, and वही same return of premium का feature मिलता है. So practically it is coming at 0%. All right, Rhishabh. Thank you for joining us, and this was very insightful. And thank you everyone for tuning in. We hope you found this session useful. अगर आपकी कोई और क्वेरीज भी हैं जो इस सेशन में आंसर नहीं हो पाई, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आस्क पीबी का लिंक है, वहां पर आप अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू. And see you in the next one, guys. Thank you.